Hello, my dear learners of class 12. How are you all? Yes, today we'll be talking about the multiple choice questions, short questions, and long questions of the second chapter of your textbook, Flamingo. And the title of the lesson is Lost Spring. Since this lesson has two parts, today in this video we'll be discussing part 1. Are you all ready? So, let's start with the multiple choice questions. Just let me share screen with you all. Before we start with the questions, let me ask you one thing. Do you remember the chapter Lost Spring? Yes. What was it about? This book, Stories of Stolen Childhood, consists of different stories about children whose childhood was stolen. And the main reason for this is poverty, because their parents are unable to provide the basic amenities to them, and so these children have to start working in their childhood. So let's move on. The first part of this lesson, Lost Spring, is about a boy named Saheb, and he and many children Anees Jung, the writer of this book, got curious and gradually started talking to these boys and came to know many things about them. So one of the boys says, sometimes I find a rupee in the garbage. So garbage for them is a something filled with wonder. For the elders, it is a source of livelihood, and for the children, it is something amusement जो उनको खुशी दे, जिसमें वो खेल भी लेते थे. कोई पुराना टॉय मिल गया, कोई पुराना शू मिल गया, तो वो भी उसमें खुश हो जाते थे, isn't it? So, hope you all now remember. So, let's move on to the multiple choice questions. So, the first question which I always ask you is, name the author of the lesson Lost Spring. So, who's the lesson written by? By whom is the lesson written by? Let's see the option. Anees Jung, Khushwant Singh, Kamala Das, Rayees Jung. So, who's the author of this chapter? Yes, option A, Anees Jung. Let's see the next question. The story is about fill in the blank. Choose the correct option, and the options are gifted childhood, stolen childhood, none of the above. So, which one do you think is the correct one? It is a story of the stolen childhood, children whose childhood has been stolen. So, option C is the correct option over here. What forces the children to live a life of exploitation? क्यों क्यों वो शोषण का जीवन जीते हैं? कौन फोर्स करता है उनको? क्या उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं? फ्रेंड्स करते हैं? लालच उनको फोर्स करता है? या पॉवर्टी, गरीबी उनको फोर्स करती है? विच वन डू यू थिंक? Why they are being exploited? You're right. पॉवर्टी, गरीबी ही तो है एक्सप्लॉयटेशन जिसकी वजह से होता है.
So these children are also exploited because of poverty. According to the author, what was garbage for the parents? Parents के लिए क्या था वो garbage? Was it a means of enjoyment, means of survival, means of sorrow, or all of the above? क्या था उनके लिए? जीविका का साधन, जीने का साधन. सो विच वन? एंजॉयमेंट तो हरगिज नहीं, सोरो भी नहीं, और इनमें से सारे भी आंसर्स ठीक नहीं है. सो विच वन इज द करेक्ट वन? मीन्स ऑफ सर्वाइवल. मीन्स ऑफ सर्वाइवल, राइट. Let's see the next one. According to the author, what was garbage for the children? बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है ना? इज इट अ मीन्स ऑफ प्लेइंग, मीन्स ऑफ टाइम पास, ए वॉन्डर, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट? इट इज वॉन्डर. हाँ, एक अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाली चीज है उनके लिए, इजंट इट? उसमें वो एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं, टाइम पास भी करते हैं, एक एक चीज को वो हटाकर देखते हैं. So let's move on to the next one. What was the complete name of Saheb? साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम, साहिब शेख, साहिब कुमार, none of the above. So you all can make out. I can see you. It is Saheb Alam. Very good. What is the meaning of Saheb Alam? तो ये साहब आलम का मीनिंग क्या है? Poor man, rich man, lord of the universe, owner of a house. देखिए, ही इज सच अ पुअर बॉय. इतना गरीब है कि कूड़े में से ढूंढता है चीजें बेचने के लिए. और नाम क्या रखा हुआ है? साहब आलम. एंड व्हाट डज इट मीन? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक. और बेचारा काम क्या कर रहा है? पेरेंट्स ने जब साहब आलम नाम रखा होगा तो क्या सोच के रखा होगा कि हमारा बेटा बहुत बड़ा इंसान बनेगा, isn't it? Let's move on to the next question. Sahib's family had come from, कहाँ से आई थी उनकी फैमिली? कौन से कंट्री से आई हुई थी? वो रेफ्यूजी थे ना, उन्होंने इंडिया में आके रिफ्यूज लिया. तो कौन से कंट्री से आए थे वो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया. Where had they come from? Bangladesh. So take the option B. What did Saheb do? क्या करता था साहेब? Rag picking, went to school, worked in a factory, did nothing. क्या काम करता था? You all are very clear about it. So option A, rag picking. Saheb's family had settled in dash in Delhi. कहाँ पर आकर सेटल हुई थी उसकी फैमिली दिल्ली में? त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, मंगोलपुरी, पश्चिमपुरी. Yes. Where did they settle down? सीमापुरी. Option B is the correct option. Let's move on to the next question. Why did Saheb go through garbage dumps? क्यों गार्बेज के जो ढेर लगे होते थे उनको ऐसे देखता था? टू फाइंड अ रूपी, टू फाइंड ए 10 rupee note, टू फाइंड कॉइन्स, all of the above. So which one do you think is the correct one? All the three options A, B and C are the correct options. So which option will be the one you will tick? All of the above, right? So there should be no confusion because all the three options are correct. So we'll mark option D, all of the above. The author says that Saheb has lost the carefree look. वो जो बेपरवाह था ना, वो कहीं भी खेलने लग जाते थे, तो वो क्यों खो गया उसके चेहरे से? Because
he has started working in a tea stall, because he has started going to school, because he now plays football, because he spends all the time with his friends. सो ऑप्शन ए सेज क्योंकि वो एक टी स्टॉल में काम करने लग गया था. ऑप्शन बी सेज क्योंकि उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था. ऑप्शन सी सेज क्योंकि अब वो फुटबॉल खेलता है. ऑप्शन डी सेज बिकॉज ही स्पेंड्स ऑल द टाइम विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि वो सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता है. तो विच वन? यस, ऑप्शन ए, क्योंकि वो टी स्टॉल में काम करने लग गया था. अब आप कहीं नौकरी करते हो तो आपको भाई टाइम से पहुंचना है, टाइम से आना है. मालिक गुस्सा करेगा अगर आप इधर उधर टाइम खराब करोगे तो, है कि नहीं? तो ऑप्शन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 12. The author finds Saheb carrying a dash: mobile phone, steel canister, bat and ball, school ball. क्या लिया हुआ है उसने? Yes, steel canister. So option B is the correct option. So these were the few important MCQs, and there can be many more. So you have to go through the lesson, read it thoroughly, and you will be able to answer in a better way to many, many more multiple choice questions. So now let's move on to the short questions. And these short questions have to be answered in 20 to 30 words, right? What does the title Lost Spring convey? ये title Lost Spring क्या हमें बताता है? Let's see. The title Lost Spring conveys how millions of children in India lose out on living the spring of their lives. That is their childhood. देखो, किसी भी इंसान के जीवन का बेस्ट पार्ट होता है उसका चाइल्डहुड. जैसे कि सब सीजन्स में से बेस्ट सीजन क्या है? स्प्रिंग. इसी तरह से चाइल्डहुड. तो अब चाइल्डहुड अगर अच्छा नहीं बीता तो समझो कि सब सीजन से स्प्रिंग सीजन आपका वेस्ट हो गया. तो ऑथर अनीस जंग हमें क्या बता रहे हैं? कैसे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है उनका बचपन खो जाता है. द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द हार्डशिप्स इन्वॉल्व टू अर्न देयर लाइवहुड. अब ये उम्र तो खेलने कूदने की होती है ना, पढ़ाई करने की होती है. अगर इस उम्र में आप कमाने लग जाओगे, इतनी मुश्किलों का सामना करोगे, तो कैसे, है ना? तो आपका बचपन खो गया ना. Poverty forces these young children to work in the most inhuman conditions, as a result of which they miss out on the fun of childhood, which hampers their growth. ये जो गरीबी है ना, इसकी वजह से उनको बहुत कठिन हालातों में काम करना पड़ता है और उनका बचपन खो जाता है. उनकी पूरी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पाती. What does the writer mean when she says Saheb is no longer his own master? क्या कहना चाहती है जब वो कहती है कि साहेब अपना मालिक खुद नहीं? Since Saheb now works in a tea stall, he is now bound to his master and feels burdened. अब वो फ्री नहीं है बिकॉज वो टी स्टॉल में काम करने लग गया है. अब उसके मालिक ने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं. आप 6 बजे आओगे, आप रात को 10 बजे जाओगे और इधर उधर नहीं खेलोगे, जहां जा रहे हो जल्दी से वापस आओगे, है ना? तो द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज इज वेरी हेवी एज कंपेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग. तो वो जो स्टील कैनिस्टर, स्टील का बर्तन जो वो दूध लाने के लिए पकड़े हुए है, वो उसके उस प्लास्टिक बैग से जिसमें वो रैग पिकिंग करता था उससे कहीं ज्यादा है. The bag was his own and the canister belongs to his master, whose orders he now has to follow. अब क्योंकि उसको अपने मालिक के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं उस नौकरी की वजह से.
so he has lost his carefree look. अब वो अपना मालिक खुद नहीं है. Garbage has two different meanings, one for the children and another for the adults. हमने MCQs में भी पढ़ा था ना कि garbage adults के लिए क्या meaning रखता है और garbage children के लिए क्या meaning रखता है ना? So let's see the answer. For the children, garbage has a different meaning from what it means for the adults. दोनों के लिए अलग meaning है. For the children, it is wrapped in wonder. Their eyes light up when they find a rupee or a 10 rupee note in it. बच्चों के लिए तो एक भंडार है आश्चर्य, और जैसे ही उनको कभी कोई कीमती चीज मिल जाती है या कोई रुपी नोट मिल जाता है तो आंखों में चमक आ जाती है. They search the garbage excitedly with the hope of finding something more. और बीनने लगते हैं गार्बेज को कि शायद कुछ और मिल जाए. But for the elders, it is a means of survival. लेकिन बड़ों के लिए केवल आजीविका का साधन है. Do you think Saheb was happy to work at the tea stall? Give reasons. Since Saheb now works in a tea stall, he is now bound to his master and feels burdened. अब वो बोझ है उसके कंधों पर. The steel canister he carries is very heavy as compared to his light plastic bag. The bag was his own and the canister belongs to his master. Bag अपना था, canister मालिक का है. अब उसके ऑर्डर्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो अपना मालिक खुद नहीं है. Describe the irony in Saheb's name. क्या irony है? The full name of Saheb, the rag picker, is Saheb E Alam, which means Lord of the universe. As per his name, he should live like a king. राजा की तरह रहना चाहिए था, लेकिन नंगे पैर, बेयर फुट, और रैग पिकिंग करता है. ढंग से उसको जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी उसको पूरी नहीं हो पा रही हैं. सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. कमेंट. सर्वाइवल का मतलब सीमापुरी में जीना है तो क्या करना है? रैग पिकिंग करनी है. कैसे? सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. ओवर द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और उसमें वो माहिर हो गए. For the slum dwellers of Simapuri, rag picking is their daily bread. उनके लिए वो रोज की रोटी है. It gives them the roof over their heads and is the very means of for their livelihood. वो उनके सिर पर, उसी की वजह से उनके सिर पर छत है और वही उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है. It is a tradition to stay barefoot. What is the attitude of the rag pickers of Simapuri towards wearing shoes? कहते हैं कि परंपरा है नंगे पैर रहना. अब ये रैग पिकर्स जो सीमापुरी में रहते हैं उनका क्या एटीट्यूड है जूते पहनने की तरफ? The rag pickers of Simapuri have different attitudes towards wearing shoes. One boy does not feel like wearing shoes. Another boy who has never owned a pair of shoes all his life wants them. But the author feels it it's not lack of money but a tradition to stay barefoot for these poor people. कि बच्चे किसी के पास है नहीं, है ना, कोई पहनना नहीं चाहता, लेकिन ऑथर को लगता है कि जब ये पॉवर्टी या गरीबी जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आती चली जाती है, तो एक तरह की परंपरा बन जाती है गरीब लोगों के लिए कि भाई हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जूता नहीं पहनना. What does the reference to chappals in Lost Spring tell us about the economic conditions of the rag pickers? क्या बताती है इनके बारे में, क्या हालात हैं इनका, आर्थिक हालात क्या हैं? The reference to chappals in Lost Spring tells us that the rag pickers were poverty stricken. बहुत गरीब थे. The fact that they are not able to buy chappals reflects their extreme state of poverty because of which they are unable to buy basic things. ये हमें ये बताता है कि उनके पास इतनी गरीबी थी कि वो चप्पल नहीं खरीद सकते थे, मतलब बेसिक जरूरतें भी उनकी पूरी नहीं होती.
Now let's move on to the long questions. What are these? What kind of life did Saheb lead at Seemapuri? कैसी लाइफ थी सीमापुरी में साहेब? काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका है. Most of the people like Saheb E Alam settled in Seemapuri were refugees from Bangladesh. शरणार्थी थे ना बांग्लादेश के अधिकतर सभी लोग. Who had fled their country and migrated to Delhi from Dhaka. वो लोग अपने देश से भागकर दिल्ली में आ गए थे ढाका से. इन द वेक ऑफ द 1971 इंडो पाक वार, 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त. Their dwellings were structures of mud, tin, and tarpaulin with no sewage, drainage, or running water. उनके जो घर थे वो कैसे थे? मिट्टी के, टिन के, कोई सीवेज नहीं है वहाँ, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है. Picking garbage and rags helped them to earn their daily bread, gave them a roof over their heads, and was their only means of livelihood and survival. मतलब काम क्या था? कूड़ा बीनना. यही उनकी डेली ब्रेड थी. इसी की वजह से उनके सिर पर छत थी और यही उनकी आजीविका का साधन थे. Though these squatters of Simapuri have no identity, but they do have a valid ration cards that enable them to buy grain. इनके कोई आइडेंटिटी नहीं है बट राशन कार्ड है जिससे कि ये अनाज खरीद सकते हैं. Living in Simapuri, which is on the periphery of Delhi, is like living in hell. कैसे वहाँ के हालात बहुत खराब. सीमापुरी के चिल्ड्रन हेयर ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल टू देयर पेरेंट्स. अपने माँ बाप के साथ वो उनकी आजीविका में ही बचपन से लग जाते हैं. An army of barefoot children appears every morning carrying their plastic bags on their shoulders and disappear by noon. एक पूरा झुंड बच्चों का आ जाता है सुबह सुबह और भाग जाता है दोपहर में, गायब हो जाते हैं वो सब बीनते कूड़े. They are forced to live a life of uh, abject poverty that results in the loss of childhood innocence. उनको मतलब वो फोर्स हो रहा है ना. कोई भी बच्चा बचपन में काम नहीं करना चाहता. उनका पूरा मासूमियत खो जाती है इस काम को करने में. Saheb, a rag picker, roamed in the streets, scrounging for garbage barefoot and deprived of education. Later, he starts working in a tea stall, but he loses his freedom and carefree life as he is no longer his own master. साहेब भी यही काम करता है, सड़कों पर घूमता है कूड़ा बीनते हुए नंगे पैर. कोई शिक्षा नहीं है और बाद में वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है और जिससे कि उसकी जो रही सही फ्रीडम है वो भी खत्म हो जाती है क्योंकि उसको अपने मालिक की सुननी पड़ती है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. हाउ डू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव? इस ये भी मोस्टली उसी में से रिपीट होगा. गार्बेज रैग पिकर्स Garbage for the rag pickers of Simapuri is considered to be nothing less than gold. Picking garbage helps them to earn their daily bread. उनके लिए तो गोल्ड का मतलब एक धन का भंडार है. उसी में से उनको रोजी रोटी मिलती है, डेली ब्रेड मिलती है. Gives them roof over their head and is their only means of livelihood and survival. For the innocent children, garbage is wrapped in wonder as they marvel at the prospect of finding a coin, a currency note, or a curious that sustains their hope. मतलब उसी में से उनको सब कुछ मिलता है तो एक आश्चर्य का भंडार है उनके लिए. These children grow up to become partners in survival with their parents. Simapuri houses around 10,000 rag pickers, mostly Bangladeshi refugees who have lived there for more than 30 years without an identity and without parents. वहाँ रहते हुए उनको 30 years हो गए हैं, कोई identity नहीं है, but they have ration cards. These people live in mud structures with roofs made of tin and tarpaulin. The ration cards that enable them to get their names on voters' lists and enable them to buy grain and garbage are their means of survival. Food is more important to them for survival than an identity. ये देखो कितना कैसा सेंटेंस है ना कि
अनाज, फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उनको आइडेंटिटी नहीं चाहिए, उनको तो पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So these were few important questions which I wanted you all to go through, and we have gone through today. We have gone through the first part of this lesson, and very soon I'll be taking the second part of this lesson, which is about Mukesh, who belongs to the family of Bengal settlers in Firozabad. So this is all for today. But let me tell you, yes, please like this video and subscribe my channel English. So this is all for today. Goodbye.